नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर दत्ता 369 channel, your favorite channel for all kinds of expiry day strategies and replay videos. ये हमारा चैनल है। ये चैनल में 2023 का हर एक एक्सपायरी का वीडियो मिलेगा। बहुत शॉर्ट वीडियोस और 5 to 7 मिनट्स रिप्ले वीडियोस मिलेगा। आप देखेगा तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इन आवर मिस्टर दत्ता 369 चैनल you can find all expiry days videos from January 2023. You can get in two formats, within 1 minute format and 5 to 7 minutes replay format. So आप लोग को you can get a very good experience by watching them how the day played out. अभी स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे। सेलर्स डे क्या है, व्हाट इज़ द आइडियल प्रीमियम हम लोग बेच सकता है, और स्टॉप लॉस क्या है, अगर रिवर्स मार्केट रिवर्स हो गया तो कैसा मैनेज करने क्या है, और एंड हाउ टू मेक इट ए जीरो लॉस कैसा करने का है, वो सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी ईच एंड एवरी वन. How do we define a bearish day? Sellers day define करना बहुत आसान है. Whenever candle closes below yesterday low, then we can assume that is going to be a seller's day, like this. Time frame will be depend on your risk appetite. It can be 5 minutes or 15 minutes. It all depends on what time frame you follow. अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आइडियल प्रीमियम वी कैन सेल. हम लोगों को सब पता है दिस प्रीमियम्स चेंजेस विथ विक्स, सो यूजुअली इट्स अराउंड 2 to 3 rupees, but ideally it's better to pick a place where you can be safe. I'll show you how. Now VIX is around 11, so it's better to sell at least 100 to 150 points above open. So in this case 19,400 is the open, so better to sell 19,500, or even better to sell 19,550 to be on a safer side. If VIX increases like 15, 16, we need to go further to be on a safe side. Stop loss, ideal stop loss, whenever the sold premium becomes double, then close immediately. For example, you sold it for 2, even if it becomes 4, close. So ideally either you make 1% profit or 1% loss on this day. Instead of taking stop loss, you can make it to zero loss. I made a video on how to make a to zero loss any strategy. Please watch that video and you will get a fairly good idea. Majority of the times we can figure it out. V-shape move is coming before move starts. हम लोग पहचान सकता है कि V-shape move आने वाला है. इसके लिए I am taking 1 week live as an example. So इसके example के साथ मैं बताता हूँ, आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकता है. जीरो लॉस कैसा बनाना है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, देखिए. एंड इस वीडियो में भी आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन मेक इट. हम ये वीडियो में भी मैं मौका मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ एट व्हाट स्टेज यू कैन मेक इट जीरो लॉस. अभी हम देखेंगे ये स्ट्रैटेजी को कैसा अप्लाई करने का इन ए लाइव सिचुएशन. लेट्स अप्लाई दिस फॉर 20th June 2023 एक्सपायरी डे एंड सी व्हाट हैपेंस. पहले तो हम व्यू बनाता है, क्योंकि बायर्स डोमिनेटिंग है, सेलर्स डोमिनेटिंग है. बाद में ये रूल्स अप्लाई करके देखेंगे. फर्स्ट विल मेक ए व्यू whether buyers are in control or sellers are in control.
Then based on that we'll make a trading plan for that day before applying the strategy. Thursday seller's day है और Friday and Monday buyer's day है. So for buyers they need to keep above 19,450. Otherwise sellers will come and take it to 19,200. This is the trading plan, and then based on that we'll make an adjustments. According to our strategy, now it's bearish day, seller's day confirmed. So all these market strikes are ideal strikes to sell with the defined stop loss. If market keeps going down, there will be no issue. But market reverses like a V shape, then it will be a challenge if you sold it naked. Ideally, it's better to sell with an edge. I will explain all those techniques in later videos. Now watch this, what's going on at 19,350 strike. Watch open interest and price, what is going on. Based on that, we can make decisions for any adjustments required. Fin Nifty is very dangerous. Sometimes it reverses immediately, or sometimes it reverses in second half. So you never know, we can never trust. Okay. Though we have a trading plan, better stick to the stop loss criteria, and better to take any trade with proper hedges. Try to watch this video in big screen like laptop, or if possible on TV. You might see lot of points here, lot of clues. You get lot of clues. आपको बड़ा स्क्रीन में देखेगा तो आपको बहुत क्लूज मिलता है बिफोर मूव हैपन्स. आप 19,350 का देखते रहिए, आपको ज़रूर क्लू मिलता है अगर वी शेप रिकवरी आ रहा है तो. Watch ATM strike, which is 19,350 in this case, both price action and open interest for any clues. If we get any V-shaped recovery or something like that, and watch prices also. Whenever you see acceptance above TWAP line, so you can bring the stop loss to, based on your risk appetite, to make it to zero loss, or you are happy with the profit, you can even close, because you never know how many points up move on expiry days because of gamma can come. डेटा में क्लियरली क्लोज मिल रहा है कि अप मूव आ सकता है. सो अभी तो जीरो लॉस करने के लिए आप इधर क्लोज द ट्रेड और बाय द हेजेस और मूव द स्टॉप लॉस, सो दैट आपको लॉस नहीं आएगा.
एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारा तरीका है. I'll explain those in later videos. अभी भी मौका है पोजीशंस एडजस्ट करने के लिए. स्टिल यू हैव ए चांस एंड वॉच एट 19400 फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. After 2 o'clock, it's now for the gamma move. $19,500 strike gave some tension, otherwise expiry was cool, but the move came late in the day, that's why 19,500 did not give that much trouble. But if it had come within first 1 hour or after taking the position, 1% stop loss would have been hit. So it's better to be careful at the expiry date with the defined stop loss, and always better to trade with hedge. There are a couple of ways to adjust this position instead of waiting till last minute. So please help me subscribe more people so that I can come out with those adjustment videos before the move happens. Thank you very much. And if any questions or comments, please let me know. I would be happy to help you.